So students, my voice is clear to you. Now we will start our session in few minutes. Till now, just share your this class, share this session to your friends and your groups. As you know, in today's class, we will discuss some important parts of triangles, congruent triangles, important questions regarding advanced that used in triangles. Okay, तो जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लें और चैट में बताएं मुझे मेरी आवाज़ है वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं है। फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। वेलकम यू ऑल on me and math. This session is on the behalf of me and math. You can go to the website meandmath.com and explore more about the mathematics. Okay, तो कुछ पूछना है before starting the class and all the things? कोई भी इशू है, कोई डाउट है, कोई चीज़ है जो आपको नहीं क्लियर है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। Okay, we are going to start our session and first question of the session you can see on your screen. Yeah, it is. Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Then there are four options. Which option is correct? You have to tell. So on the behalf of this, you have to find then which option is correct or not. Try to understand the questions. Then reply the answer. Let's see who are going to give the answer first for the question. Just understand the question. Question is saying that in an isosceles triangle. First, what is isosceles triangle? Isosceles triangle is about the sides. Two sides are equal in a triangle. That triangle is called, or that triangle is known as isosceles triangle. You all know about that. Yes or no? Yeah. Now triangle ABC is an isosceles triangle. Now here this is not clear that which two sides are equal. In triangle ABC, AB, BC, AC, three sides are equal. Three sides are there, but which two sides are equal? It's not clear. But if you look at the last portion, you look at the last statement that equal sides AC and AB. So here is man's and that sides are equal. AC and AB means AB is equal to AC. AB clear? So this question is about only one triangle, and that is isosceles triangle. So who are going to the first one to the answer? Hello everyone. Okay, let's suppose a triangle is there. So
दिस इज एन ट्रायंगल. ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी. Altitude BE and CF in this triangle, these two sides are equal, AB and AC. Now question is, which is true about BE and CF? Which is true about BE and CF? Okay, तो हम बनाते हैं triangles को यहाँ पर. Okay, BE and CF are altitude. So I draw BE and CF. Let's suppose this is BE and this is CF. Now BE and CF, what is the relation between both? B is greater than CF, B is equal to CF, or B is less than CF. So we will use property of congruent triangles here. First we will check this triangle, then we will check this triangle. Okay, so in triangle BCF and triangle BCE, we are considering two triangle BCF and triangle BCE. अब इनमें क्या क्या कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, we are discussing now. BC and BC both are equal because common. So we can write common here. Okay. Angle B is equal to angle C. Opposite sides are equal. Opposite sides, opposite angles are equal to opposite side. We know that this is the property of isosceles triangle. And angle F is equal to angle E. Angle F is equal to angle E. So here two angles are equal and one side are equal. Two angles are equal and one side equal. Angle F and angle E both, why both are equal? Because both are 90 degrees. Okay. Now can we say that triangle BCF and triangle BC both are congruent triangle? Yes, by congruent criteria AAS, angle side, the triangles are congruent. So by AAS, triangle BCF congruent to triangle BC. By CPCT, CF is equal to PE. Means both altitudes are equal. So BE is equal to CF. Done? Any other doubt? Any other? Which option is correct? C option is the correct answer. Okay. आप लोग इसमें
एक और काम कर सकते हैं। उस डायग्राम को हम वापस से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये दो ट्राइंगल्स नहीं आ रहे होते बाई चांस, तो हम यू कैन यूज अदर ट्राइंगल्स ऑल्सो। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता, यू कैन यूज दिस वन and the second one is this one. Here angle A is common. AB and AC both are equal, and angle E and F. E and F both are 90 degree. Again two angles are equal, one side are equal. वहां से भी दोनों triangles congruent होंगे, और अगर दो both triangles are congruent then BE is equal to, so you can use both. आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट आता है आप उसको यूज कर सकते हैं, बोथ मेथड्स आर करेक्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करें। यस, I hope this question is very clear. This is a very basic question and important question in case of criterias. Okay, now we will move for the next question. Here, the next one. ABCD is a parallelogram. If the two diagonals are equal, then by what criteria are the triangles ABD and ABC are congruent? ABC and ABD are congruent. Okay, take 2 minutes to solve this question and give the answer. Okay, you know there are five criterias: SAS, SSS, ASA, AAS and RHS. जब तक आप क्वेश्चन सोल्व करो, मैं क्राइटेरियाज के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर SAS, SSS, ASA, AAS and RHS. S stand for side and A stand for angle. So first criteria is about two sides and included angle. Two sides and included angle. So first side equal to the first side of second triangle, second side equal to the second side of second triangle, and included angle of first triangle is equal to the included angle of second triangle. This is the first criteria. Similarly, SSS, in this criteria, all angles should be, all sides should be equal. All sides should be equal. Side 1, side 2, side 3, all are equal. Okay. ASA, angle side angle, angle side angle, ये SAS का जस्ट अपोजिट है, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड, तो टू एंगल, फर्स्ट this one and this side. So first angle equal to the first angle of second triangle, second angle equal to the second angle of second triangle, and the included angle of first triangle, included side of first triangle should be equal to included side of second triangle. This is the criteria ASE. Fourth one is AAS, two angle and one side. Any two angles are equal and one side should be equal. And RHS. RHS.
R stand for right angle, H for hypotenuse, S for side. So this is basically a right angle triangle. This is specific for right angle triangle. तो RHS एक ऐसा क्राइटेरिया है जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है. Is that clear? This is the basic idea. In RHS, in right angle triangle, hypotenuse, if both hypotenuse are equal and any one side is equal, then both right angle triangles are congruent. Okay, तो ये बेसिक आइडिया है. आगे इन फर्दर क्वेश्चंस अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए वो आई विल गिव द आइडिया फॉर दैट. अगर हम चार ऑप्शंस की बात करें इन दिस क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द पैरेललोग्राम. In parallelogram, a diagram shows that it's a rectangle, but question says it's a parallelogram, so don't be confused with the diagram. We consider it only parallelogram. If parallelogram is there, then RHS cannot be the answer because अभी मैंने आपको स्पेसिफाई किया है RHS is only for right angle triangle और parallelogram में right angle triangle नहीं होता. क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ स्क्वायर्स में, पैरेलल रोम्बस एंड राइट रेक्टेंगल में होगा. ठीक है, पैरेललोग्राम में नहीं. तो दो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया हमारा चला गया ना. द ऑप्शंस ए बी सी तीनों में से एक ऑप्शन हो सकता है. वी विल कम टू द क्वेश्चन. ए बी is equal to CD and BC is equal to AD. This is the property of parallelogram. Now we are talking about the triangle ABD. Triangle ABD. This one triangle. And the second triangle is triangle ABC. अब आपको और हमें दो चीजें क्लियर दिख रही है, that AB is equal to AB, AD is equal to ABC, and the question says diagonals are equal. Diagonals are equal means AC is equal to BD. So we can use AC is equal to BD. So BD is equal to AC. Here, all three sides are equal. Means both triangles are congruent. By which criteria all three sides are equal? S criteria is the correct answer. Yes. So in this question, our criteria is side criteria. Clear? Any doubt? No. Let's move for the next part. Here is the next question of the session. If AB is equal to QR, BC is equal to RP, and CA is equal to QP, then which of the following holds? We have two triangles, triangle ABC and triangle PQR. Now, conditions is given, कौन सा triangle किसके congruent होगा? ये बहुत important question है because we always confused in this question, in this part. Let's suppose this is the first triangle and this is the second triangle, triangle ABC. अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं इस तरह से, तो किया हमने PQR. Now confusion is the triangle. If I wrote right triangle ABC congruent triangle PQR, or I can write like triangle ABC congruent with triangle QPR. दोनों तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों सेम है,
ट्राइंगल तो एबीसी और पीक्यूआर ही है, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट है। फिर दोनों में गलत क्या है? तो नेमिंग इम्पोर्टेंट है। अगर हमने नेमिंग चेंज किया तो कॉन्करेंट की चेंज हो जाती है, दोनों सेम नहीं है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। ओके, एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर एक अलग कॉन्करेंट पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो अब किस तरह से हम ये काम करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ ना। लेट सपोज सेम चीज विल टेक हियर, AB is equal to QR, AB is equal to QR, BC is equal to RP, BC is equal to RP, and CA is equal to QP. Single line, both are equal, double lines both are equal, and triple lines both are clear. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Now just try to move from first, second and third. लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, किधर मूव किया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ। तो यहाँ से भी स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट किया और हमने इधर मूव किया। तो यहाँ से जब स्टार्ट किया तो नेम क्या आया, ABC। जब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो नेम क्या आएगा, QRP, QRP। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल QRP। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। ऑप्शन ABC इज PQR, मीन्स ये तो गलत हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइंगल एबीसी नहीं है, बट राइट हैंड साइड में पी क्यू आर है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के लिए इसको मैं वापस से रब कर देता हूँ। पी क्यू आर के लिए हमें कहाँ से मूव करना होगा, थर्ड से मूव करना होगा, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से भी हम थर्ड से मूव करेंगे, थर्ड, फर्स्ट, देन सेकेंड। तो हियर सी ए बी and second triangle PQR, both are congruent. So check CAB and PQR. This is in D option. So D option is the correct answer. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। लेट सपोज ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ABC and PQR. If I says triangle ABC is congruent with triangle PQR, and if I says triangle ABC is congruent with triangle RQP. What is the difference here? क्योंकि दोनों यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ट्राइंगल सेम है। अगर ट्राइंगल सेम है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, नेमिंग में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, नेमिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम है वो हम चेक करते हैं। तो हमने एक वर्ड पढ़ा है CPCT, CPCT, you all are aware of that, CPCT, corresponding part of congruent triangle are equal. CPCT stand for corresponding part of congruent triangles are equal. Corresponding part means A is corresponding to P, B is corresponding to Q, and C is corresponding to R. Means angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. Same thing in the right side. Angle A is equal to angle R, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle। और साइड के ऊपर हम फोकस करें तो ए बी किसके करस्पॉन्डिंग होगी, पी क्यू के। बी सी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, क्यू आर के। और ए बी ए सी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, पी आर के। तो आई कैन राइट ए बी
is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR. ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आ, इसको एक बार रिवाइंड करके वापस से देख सकते हो. सेम thing apply in the second triangle. So AB is equal to RQ, BC is equal to QP and AC is equal to RP. अब चेक करो क्या दोनों में जो कॉन्ग्रेंट पार्ट है वो सेम है या अलग अलग है. चेक करते हैं. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू आर, दोनों अलग अलग हुए ना. मीन्स जो इक्वल पार्ट है, कॉन्ग्रेंट पार्ट है, वो डिफरेंट है. ए बी इज इक्वल टू पी पी क्यू, बट हियर ए बी इज इक्वल टू आर क्यू. BC is equal to QR, here BC is equal to QP. AC is equal to PR, here AC is equal to PR. तो ये चेंजेस हैं. तो अगर हमने नेमिंग गलत कर दी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेंज हो जाए. इसीलिए नेमिंग इंपॉर्टेंट है. तो ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर अगर कॉन्करेंट है तो ट्राइंगल एबीसी एंड आरक्यूपी कॉन्करेंट नहीं हो सकता. ठीक है. इज दैट क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन again we come to the question, triangle CAB is congruent with triangle PQR is the correct part. Now I hope this point is clear to everyone. We will move for the next question after that. Okay, take 2 minutes to understand this. I'll show you the solution again. Yeah, here the solution. Now check. If you have any doubt, you can ask me in the chat. I'll wait for 2 minutes. This is very important part in congruent triangle. So this should be the clear. Okay, naming is very important. Okay, चलो कोई डाउट नहीं है. No doubt here with anyone. Let's move for the next question. Okay, so the next question of the session is here. Which of the following statement is incorrect? This question is about incorrect. Which option is incorrect? First option, two squares having the same side length are congruent. Two rectangles having the same area are congruent. Two circles having the same radius are congruent. Two lines having the same length are congruent. बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा ऑप्शंस के ऊपर. ऑप्शंस आर लिटिल बिट कंफ्यूज. टू स्क्वायर्स हैविंग द सेम साइड लेंथ आर कॉन्करेंट. इसका आंसर चलो मैं बता देता हूं आपको. आपने चैप्टर पढ़ा है यूक्लिड ज्योमेट्री. यूक्लिड ज्योमेट्री में लिखा है टू लाइंस हैविंग द सेम लेंथ आर कॉन्करेंट. यस, दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. टू सर्कल्स हैविंग द सेम लेंथ, same radius are congruent. Again, in Euclid's postulates, you studied that any circle can be drawn with the same any radius and any center and the same radius, then circles are congruent. Two squares, option A, two squares having the same side. Two squares having the same side. Again, they are congruent because all sides are equal. So, so A option is also correct. Now come to the B option. अब तीन ऑप्शन सही है तो डेफिनेटली चौथा ऑप्शन गलत होगा, बट हम चेक कर लेते हैं. टू रेक्टेंगल्स हैविंग द सेम एरिया आर कॉन्करेंट. अब ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एल इन टू बी होता है एरिया, तो एल और बी अगर सेम होंगे तभी तो उनका एरिया सेम आएगा. हम चेक करते हैं कि मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड दिस इज द सेकेंड रेक्टेंगल. साइड है 16
and 2. So the area A1 is equal to 16 into 2 is equal to 32 centimeter square. 16 centimeter, 2 centimeter. For the second rectangle, the length is 8 centimeter and breadth is 4 centimeter. So area A2 is equal to 8 into 4, 32 centimeter square. Yes, in both case area is same, but rectangles are not same. So rectangles are not same means option B is incorrect and the question is about the incorrect. So our answer is B. B is the correct. Option A is true, option C is true, and option D is also true. So option B is false or incorrect. So our answer is that clear. Now move for the next one. This is the next question. I hope this session is going to very useful to you. So I request you all to share this class with your friends and your groups. This class, this session, and this live class is organized by Me and Math. For more details about Me and Math, you can log into meandmath.com. The question is, if the bisector of angle A of triangle ABC is perpendicular to the base BC of the triangle, then triangle ABC is ट्राइंगल कौन सा होगा ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल एसएसएलएस ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आपने थोड़ा सा दिमाग यूज किया है तो और ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है स्केलन ट्राइंगल्स में ऐसा नहीं होता है ना स्केलन ट्राइंगल्स के साथ which option should be the correct let's wait for the answers we are going to the answer first bisector of the angle A of triangle ABC yeah चलो इसका डायग्राम बनाते हैं अगर आप डायग्राम अच्छे से बना तो क्वेश्चंस को सोल्व करना काफी इजी होगा just remember one thing in geometry not in triangle in geometry if you draw the diagram perfectly the probability of your answer will be increased जितना अच्छा आप डायग्राम बनाओगे अप टू द मार्क आपका आंसर आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ज्योमेट्री में डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिना डायग्राम्स आप आंसर्स नहीं निकाल पाओगे इन ज्योमेट्री तो one student is saying that answer is SSLH let's solve the question so we will do the diagram of triangle okay so this is triangle ABC in triangle ABC we have to draw angle bisector so of A so this is the angle bisector of A so angle bisector means angle divided in two equal parts so it's A by 2 and it's A by 2 both angles are equal divided in two equal parts and this is perpendicular to other side so this angle is 90-degree now I have to tell or we have to tell that triangle ABC is what yes very simple we can choose this triangle and this triangle in both triangle क्या क्या सेम है क्या क्या नहीं है वो चेक करते हैं इन ट्राइंगल ए बी पॉइंट को
नेम दे देते हैं हम डी एंड ए सी। ए बी और ए सी के बारे में नो आइडिया, so we cannot say AB, but we can say that angle BAD is equal to angle CAD. Second thing, angle BDA is equal to angle CDA, and AD is equal to AD. Common है. So here, though two angles are equal and included side also equal. Two angles are equal and included side equal. So both triangles are congruent using ASA. So triangle ABD is congruent with triangle ACD by AS. Angle, side angle criteria. So by CPCT, I can write AB is equal to AC. AB is equal to AC means two sides are equal. Then a triangle is isosceles triangle. Yes, D Mandal is correct. Triangle is isosceles triangle, and isosceles triangle means B option is the correct. In this question, answer is B, isosceles triangle. This is the solution. Check the solution. If any doubt, anything which is not clear, just write in chat box. Let's move for the next one. Next question start करें. Okay. So now we are moving the next question of the session. Here is the next question of the session. If two triangles ABC and PQR are congruent under the correspondence A equal to P, B equal to Q, and C equal to R, then symbolically it is expressed as. The same question we have done already. अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस चीज को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में. So I hope this question now very easy for you. After my explanation in previous question, this is very easy. अगर आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा तो again this question little bit different. Two triangles are congruent, then which option is correct? Question is about congruent. Congruent. Question is about congruent. Focus on this word. Then you are able to give the answer of this question. Anyone in the class who's going to answer? Okay. We will discuss from the last option. Triangle ABC and triangle PQR as isosceles triangle. No, not isosceles. Option wrong. Scalar triangle ये भी नहीं है. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो आइसोसेलेस हो भी सकते हैं, स्केलन भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. अगर फर्स्ट ट्राइंगल स्केलन है तो डेफिनेटली सेकंड भी स्केलन होगा. फर्स्ट आइसोसेलेस है तो सेकंड भी आइसोसेलेस होगा. फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है तो सेकंड भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा. फर्स्ट इक्विलेटरल है तो सेकंड भी इक्विलेटरल होगा. व्हाई? बिकॉज बोथ आर कॉन्करेंट. So first and second congruence means first and second both are exactly same. तो C सही हो सकता है. It may be, but not always. So D option is wrong, C option is wrong. Now option number A and B. यहाँ पर दो
words यूज की equal and this symbol. This is for equal, this symbol, and this symbol represent congruent triangle. Congruent. So option number A is correct answer. Why? Because we are talking about the congruent, not equal. So option number A is the correct one. Okay. Next question of the session. Yeah. Two equilateral triangles are congruent when दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कब कॉन्करेंट होंगे? दो ट्राइंगल्स कब कॉन्करेंट होते हैं? जब वो कोई एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, कॉन्ग्रेंट क्राइटेरियाज में से 5 क्राइटेरियाज में थे, उनमें से कोई भी अगर एक क्राइटेरिया फॉलो करता है, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट. बट यहाँ पर क्राइटेरिया तो है ही नहीं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट द इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो गिव द आंसर फास्ट. For two equilateral triangles, which option is correct when they are congruent? We know that two triangles are congruent if sides are equal. If two sides are equal, one angle is equal, like that. So if we move for the options, first option is areas are proportional. Proportional. Proportional word. What is proportional? Proportional means A proportion B. Okay. Ratio. Proportional means ratio. So in congruent, we are not talking about ratios. कॉन्ग्रेंसी में हम कभी भी प्रोपोर्शनल और रेशियोज के रेशनल के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं. वी आर ऑलवेज डिस्कस अबाउट इक्वल. सो द प्रोपोर्शनल वर्ड्स के सारे ऑप्शंस गलत हो जाए. एंगल्स आर इक्वल. अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो कंपलसरी नहीं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो. बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ऑल थ्री एंगल्स. In the second triangle also, angles are 60 degree, 60 degree, 60 degree. But side is 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. In the second triangle, side is 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter. Both triangles are not congruent. The D option is wrong. Yes, B is the correct one. Sides are equal. If sides are equal, then triangles is congruent, because in equilateral triangle, always all three sides are equal. If one side is equal, then other three sides are equal. Angles are equal. Means all is equal. So triangle is congruent. Here, next question. Triangle ABC is congruent with triangle PQR. Then which of the following is true? ये भी क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. आई होप यू ऑल आर एबल टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नेमिंग. हमने नेम क्या दिए हैं? Because in congruent triangle, naming of the triangles are very important. Because the word CPCT is based on the naming. Congruent part of congruent, corresponding part of congruent triangles are E. तो अगर हमने नेम चेंज कर दिया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल चेंज. तो आर everything will change, criteria will change, and so many things change. So we will never change the names. So always focus on corresponding part. A, B, C congruent with P, Q, R.
This is corresponding this. Angle A is equal to angle P. This is corresponding to this, means angle B is equal to angle Q, and C is corresponding to R. Angle C is equal to angle R. This question is options are about the sides, so we will discuss the sides. AB is congruent with PQ, means AB is equal to PQ. BC BC is corresponding to QR. So BC is corresponding to QR. And last one is AC and PR. So AC is equal to PR. चेक करो तीनों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. AC is equal to PR, yes. CA is equal to RP. AB is equal to RP, no. AB is equal to PQ. AC is equal to RQ, no. AC is equal to PR. And the last option CB, CB is equal to QR, not QP. So CB is equal to RQ. So D is wrong, C is wrong. A option is the correct answer. A is the correct answer here. So the answer is A for this question. Here, geometry is very easy if you follow the basics. If you don't follow the basic, it's difficult. बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होना. कॉन्करेंट क्या है, क्यों है, कॉन्करेंट्स का मीनिंग क्या है, ट्राइंगल्स कॉन्करेंट क्यों होते हैं, क्या रीजन है बिहाइंड, अगर कॉन्करेंट है तो क्या चीजें इक्वल होंगी, क्या इक्वल नहीं होंगी, क्राइटेरियाज क्या है, क्राइटेरियाज क्यों फॉलो करते हैं. हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से. क्राइटेरियाज हमने पढ़े हैं, अभी डिस्कस भी किए थे. देयर आर 5 क्राइटेरियाज: SAS, AAS, ASA, SSS, RHS. तो जब सब कुछ है तो SSA क्राइटेरिया क्यों नहीं है, AAA क्राइटेरिया क्यों नहीं है. ये दो क्राइटेरिया होने चाहिए थे. जब SSS है तो AAA क्राइटेरिया भी हो सकता. एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड है. यहाँ पर देखो, एंगल साइड एंगल है और एंगल एंगल साइड है, तो साइड साइड एंगल क्यों नहीं है. ये क्राइटेरिया भी तो हो सकता था ना, बट ऐसा नहीं है, तो क्यों नहीं है ऐसा क्राइटेरिया. कभी आ, जब आपको टाइम मिले तो आप इन दो क्वेश्चंस को सोचना, इनका रिप्लाई अगर जवाब आता है तो चैट बॉक्स में लिखना कि सर व्हाई आई गॉट द आंसर, why SSA and EEA are not the criteria of the congruent, but because of this. Okay, question is clear. We have 5 criteria for congruent triangles. SSA and AAA, angle angle angle, are not the criteria of congruent triangle. Why? इन विचारों ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या गुनाह किया कि क्राइटेरिया नहीं, ये आपको बता. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. If the altitude from vertices of a triangle to the opposite sides are equal, then angle. Altitude from vertices of triangles to the opposite sides are equal, then the triangles. ये तो प्रॉपर्टी भी है. ये ट्राइंगल है. ट्राइंगल में अगर ये फर्स्ट एल्टीट्यूड, सेकेंड एल्टीट्यूड एंड थर्ड एल्टीट्यूड, अगर ये तीनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं तो कौन सा ट्राइंगल होगा. यस, डेफिनेटली इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर तीनों चीजें इक्वल है तो तीनों चीजें एक ही ट्राइंगल में इक्वल होती है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल. आइदर थ्री साइड्स इक्वल, either three angles equal, either three medians equal, either three angle bisectors equal, or either three altitudes are equal. अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों चीज एक साथ इक्वल है, दैट मींस इट ऑलवेज इक्विलेटरल ट्राइंगल.
Okay, I hope this question is clear. This is all from my side. I hope you all find this session very useful in your learning skill. If anything is missing, just write in comment. I'll definitely reply after your comments. Okay. Thank you for this session to be with us. This session is organized by me and Ma. Okay. Thank you all. Thank you very much. Bye bye, class. Bye bye, everyone.